हेलो व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एटॉमिक हार्ट। एंड गाइस, यहाँ पे जो तहस नहस हुई है ना, इसके बाद मुझे जल्द से जल्द इस फैसिलिटी से एस्केप करना होगा। एंड यहाँ से गाइस हम लोग अपनी गेम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड भाई, जो भगदौड़ और भसड़ मची हुई है ना यहाँ पे रोबोट्स की वजह से, उसको किसी भी तरीके से अब रोकना ही होगा। बिकॉज अभी भाई लिमिट्स क्रॉस होते जा रही है, रोबोट्स ज्यादा ही पागल हो रहे हैं एंड हर एक बंदे को अटैक करते जा रहे हैं। No, I got killed by a grenade. I'm so sorry that happened. I didn't want any of this, but none of it matters right now. So what does matter, you crispy-ass critter? We have to meet. You need to see this with your own eyes. I'll show you everything. What do you mean by everything? You trust Sechenov too much, but he's keeping you in the dark. You have no idea what's really going on. You need to see it with your own eyes or you're not gonna believe it. You got that right. I have no fucking idea what's going on. You will understand when you see it. I have proof. I'll be waiting in the Academy of Consequences. The entrance is inside the lighthouse. Trust nobody. I don't. ओ भाई, तो गाइज अभी अभी लरीसा फिलाटोवा का कॉल आया था हमें। एंड गाइज वो कह रही है कि उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स है ना जिसको अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें सेचेनॉव से भरोसा उठ जाएगा। एंड लरीसा फिलाटोवा ही सही साइड में है। तो यार फटाफट से उसने जिस लोकेशन पे बुलाया ना वहां पे चलते हैं एंड देखते हैं उसके पास क्या प्रूफ्स है। तो प्रोसीड टू द लाइट हाउस। चलो भाई। बाय द वे, सब कुछ रिलोडेड है कि नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से रोबोट आ रहे हैं ना, सब कुछ रिलोडेड रखना है हमें। चलो रिलोड हो गया ये भी। कैलाश को भी रिलोड करते हैं। लेट्स गो। To be free of any control other than that of their bloodthirsty master. ओ भाई साहब, अरे क्या ये? हाय, क्या है? अरे भाई, बॉस फाइट! क्या बदतमीजी है। अच्छा वो रिलोड कर लिया हम लोगों ने। तेरी तो इसकी बजानी पड़ेगी। ये मस्ती कर रहा है आते साथ ही। ये ले बेटा यार, अपनी लाइफ बहुत कम है, पहले लाइफ लेते हैं। हाँ, कहाँ गया? अरे नहीं 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 नहीं, बुरा हुआ। चोमू भाई, क्या कर रहे हैं यार? ये तो बहुत डिफिकल्ट बॉस है। ओके, यहाँ पे ना गाइज मैं कवर ले सकता हूँ। इसको फैट बॉय से उड़ाते हैं। कहाँ है? कवर 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 कवर। ये वेल के पीछे कवर लेते हुए खेलना है। कुछ हो नहीं रहा है क्या इसको? पास से जाके देते हैं इसको। बट गाइज मैं जितना पास जा रहा हूं उतना ज्यादा प्रोन हो जा रहा हूं इसके अटैक्स के लिए। भाई रिलोड तो करने दे यार, इतना बदतमीजी क्यों कर रहा है ये? लेजर से बचने का तरीका तो मिल गया इससे, बट मुझे ना बार बार रोटेट करते हुए इसके पास जाना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा। कहाँ? अरे 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 अरे, ये अभी तक का सबसे टफ बॉस है यार। बहुत मुश्किल दे रहा है मुझे। कहाँ गया? देखो, अरे यार कैसे हराएंगे इसको? अबे पागल, तो पड़ी क्या? और लेगा? ये ले। और लेगा? कहाँ गया? आजा। अरे ये ना बुलेट्स वेस्ट नहीं करते, डोमिनेटर थोड़ा यूज करते हैं। भाई साहब, कहाँ गया? आजा भाई प्लीज, मैं घूम रहा आजू बाजू में। वो रहा। कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या फॉर्म है भाई साहब? भागो।
ये जाने भी नहीं दे रहा है साइड, बीच में ही मस्ती कर रहा है। एक काम करते गाइस, मिली वेपन निकालते हैं अपना। दैट इज द लास्ट होप, बिकॉज कोई वेपन इस पे काम। अरे ये फ्रीज क्यों हो गया? हो गया तो अच्छी बात है। ये ले भाई, आई थिंक ना गाइस इसको कुछ कूल डाउन हुआ है। जल्दी अटैक करते इस पे। हो गया, छूट गया। तेरी तो यही इसका वीकनेस है गाइस। आई थिंक आई फाउंड आउट द वीकनेस। इसके नीचे ही खड़े रहना है। मार ही नहीं पाएगा मुझे। ऐसे ही उड़ाएंगे भाई तेरे को। मस्ती कर रहा था ना तू तब से। तेरे नीचे ही खड़े होके शॉटगन देते हैं अब इसको। और ये नीचे से भी अटैक कर रहा है। लाइफ खत्म। नाइस वन। आते साथ ही बॉस फाइट हो गई यार यहाँ पे। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। अरे भाई, लेजर देख रहे हो इसकी गाइस? बट खत्म। इसका खेल खत्म। बदतमीज था यार ये बॉस। हम लोग फैट बॉय से भी ना सही तरीके से एम नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं। कलाश रिलोड। डोमिनेटर ठीक है। शॉटगन रिलोड। लेट्स प्रोसीड। हमें जाना है गाइज लाइट हाउस तक। बट ये नहीं पता है कि यार लरीसा फिलाटोवा के पास ऐसा क्या प्रूफ है जो वो मुझे दिखाना चाहती है। बट गाइज ये जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट होने वाला है, बिकॉज अगर वो प्रूफ्स रखी है ना अपने पास तो भाई जाना ही पड़ेगा। क्या पता अभी तक हम लोग शायद गलत साइड को सपोर्ट करते हुए आए हो। Real combat robots are far deadlier. There aren't any combat bots here. Not yet, but once collective launches, they will be everywhere. And 2 of them will be equipped with beta connectors. Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You in the rings are driving me nuts. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? Done. Happy now? Good decision, Comrade Major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's hope so. अच्छा तो गाइज अपने हीरो ने ना वो बेटा कनेक्टर्स जो कि रिंग्स है वो पानी में फेंक दिए, बिकॉज अपना ग्लव कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि यार इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे ना और भी तबाही मचाई जा सकती है रोबोट्स को कंट्रोल करके वंस कलेक्टिव 2.0 इज लॉन्च्ड। तो भाई अपने हीरो ने फेंक दिया इसे पानी में। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोव बहुत अच्छी डिसीजन है ये। और रोबोट्स Crap, what a surprise. क्या How'd हुआ? they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer Oh. memory. Combat mode has been disabled, and the robot... ये क्या था? ये क्या हुआ? ये हुआ क्या यार? हम लोग नीचे उतरे और किसी की लेजर लग गई क्या? कॉम्बैट मोड तो डिसेबल हुआ, लेकिन अभी अभी सचिनोव ने कॉल किया अपने हीरो को एंड ये बताया कि कॉम्बैट मोड डिसेबल हो चुका है बिकॉज विक्टर पेट्रोव के हेड से वो इंफॉर्मेशन निकाली जा चुकी है। कोई अटैक कर रहा है क्या लेजर से? ओके चलो अभी ठीक है। पता नहीं तब क्या हो गया था। Thank you, sir. चलो सचिनोव तो तारीफ कर रहा है हमारी। ओके तो सचिनोव कह रहा है अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे विक्टर पेट्रोव के सिर से कॉम्बैट स्टॉप कर दिया जा चुका है एंड यहाँ से हमें वैकेशन लेके लीव पे जाना है। So don't tell him. बट अपना हीरो ना सीक्रेटली लरीसा फिलाटोवा से मिलने आया बिकॉज उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उसे शेयर करनी है हमारे साथ। तो एक बार बिना बताए सचिनोव को देखते हैं कि उसके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है। A lighthouse, huh? यहाँ पे सेफ बनता So है। where is she? Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? Do you Locked. trust Dr. Filatova? I don't trust anyone, but she's got something important to tell me.
And I'm sure Dr. Sechenov's देखा hiding तो something. डॉक्टर सेचनोव Has इज Dr. हाइडिंग Sechenov समथिंग ever गाइस. told you वो about कुछ ना his कुछ इन्फॉर्मेशन plans? छुपा के Not रखा है really. जो हमें बता I नहीं mean, रहा है. he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock and the boss didn't even bat an eye. Is the launch of Collective really so important he can't even delay it out of respect for the dead? I have no data on this topic, Comrade Major. No data, huh? Well, I don't have any data either. So let's go get some. राइट. तो गाइज अभी ना हमारे हीरो को भी डाउट आने लग गया है कि डॉक्टर सेचनव कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके एक्शंस ना ऐसे है कि जो डाउट जनरेट कर रहा है. तो यार चलो फटाफट से मैं निकल पड़ता हूँ लरीसा फिलाटोवा से मिलने के लिए, एंड उसके पास क्या इन्फो है जल्दी से पता करते हैं, बिकॉज गेम ऐसा लग रहा है अब एंड की तरफ बढ़ते जा रही है. तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट ना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे. ऊपर जाना है क्या? आई थिंक नीचे जाना है. पॉइंटर तो नीचे दिखा रहा था मुझे, पर ठीक है ऊपर एक बार एक्सप्लोर करके आ जाता हूँ गाइस. नाइस रिसोर्सेस. अब नीचे चलते फटाफट. What do we have here? A chair and a TV? This isn't what I was expecting. What were you चेयर expecting? पे दिखा रहा है I पॉइंटर. चलो suspect that this देखते room हैं. has a specific function. क्या है भाई, कार्टून देखना है क्या टीवी पे? क्या बदतमीजी है. लरीसा कहाँ पे है? ओ सीक्रेट लिफ्ट. भाई साहब कहाँ जा रहा हूँ मैं? कहाँ लेके जाया जा रहा है? I believe that the unscheduled acceleration was caused by the elevator access system being hacked. Otherwise, Dr. Filatova would not have been able to initiate it. So she hacked the system. Kinda like how all these poor bastards got hacked to bits. So that's Neptune, huh? कौन सी जगह है यार ये? कहाँ पहुँच गया मैं? It looks amazing. कुछ A rock अंडर वाटर लग I रहा wouldn't है. mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to Chelome. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she गाइस tries to अपना take ग्लव off ना again, कॉन्स्टेंटली just give it रिमाइंड back. कर रहा है मुझे I'm कि sick of डॉक्टर dealing with सेचनोव ने बोला है छुट्टी पे चले जा, यहाँ पे क्यों आ रहा है, डीले कर रहा है. बट हमने ये चीज क्लियर कर दी यार ग्लव को कि भाई इंफॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए, एक बार मिल लेते हैं एंड देन डिसाइड कर लेते हैं क्या करना आगे. अपने ग्लव को भी अलग ही पड़ी यार. ये रही लरीसा फिलाटोवा. लेट्स मीट दिस गर्ल एंड देखते हैं इसके पास ऐसी क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है. What are we doing here? What do you want? Just hear me out, P3. Let me try to give you a different perspective, and then you can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds, and they won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too, but that's not how things really are. Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. भाई ये ना कुछ नई चीजें पता चल रही है गाइज. फिलाटोवा कह रही कि कलेक्टिव 2.0 जो लॉन्च होने वाला है ना, जो कि है डॉक्टर सेचनोव का प्रोजेक्ट, उससे ह्यूमन बीइंग्स रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू फिलाटोवा ऐसा नहीं होगा. जो भी लोग कलेक्टिव 2.0 यूज करेंगे उन्हें डॉक्टर सेचनोव भी कंट्रोल कर सकता है. मतलब बेसिकली डॉक्टर सेचनोव विल बी द रूलर ऑफ एवरीबॉडी. I've got questions. Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, analytics center, and primary archive. The activities of all the other complexes are studied here in order to draw conclusions and generate probability matrices. Get to the point. The Academy has a number of interesting departments. For example, there's the Radio of the Future. By mathematically combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. But there's another very special department here called Polymerized Subject Behavioral Psychology. They're supposed to be volunteers, but... Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any funny business at all and I'll kill you.
This is your last warning. Sure, fine. Come on, I won't waste your time. Okay. चलो lead on. देखते हैं गाइस, जो भी डॉक्टर फिलाटोवा कह रही है ना, क्या वो बात सच है? बिकॉज इसके पास कुछ प्रूफ्स एंड एविडेंसेस है. लेट्स सी. Well, are you ready? Disable polarization. ओ भाई, क्या है ये? इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं. Fuck is this In place? A haunted cages. house or something? It's a tomb of the mind. सब पिंजरे में The क्यों रखे हुए volunteers हैं? who laid the foundation for collective. The first few groups of subjects all died. ओके, ये Group 30 went बेसिकली insane. टेस्टिंग Group सब्जेक्ट्स 73 है killed themselves. जिन पे Group कलेक्टिव 101 2.0 killed टेस्ट each किया other. जा रहा था. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying? Whatever. Line them up. ओ गाइस, देख रहे हो? Keep going. लरीसा ना अपने the fat चिप से guy, सबको tell him to कंट्रोल jump. कर पा रही है. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. God damn you, jump! ओ भाई, सब जंप करने लग गए. जैसे ही लरीसा ने कमांड दिया जंप, सब जंप करने लग गए. तो कहीं ना कहीं ये सही बोल रही है फिर कि सेचन ऑफ कलेक्टिव 2.0 से सारे लोगों को कंट्रोल कर पाएगा. एंड इनका माइंड जो है ना, वो एक इमेजिनरी प्लेस में चला गया है एंड इनकी बॉडीज यहीं पे है. एंड जो भी कलेक्टिव 2.0 का चिप पहनेगा वो इनकी बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what collective is all about. The Bhai entire world Saab. will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to हाँ, make exactly. fun of the Sechenov world, ऐसे make क्यों people करना चाहेगा, run लेकिन? around naked and act like animals? No. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. We gotta भाई, stop this. ये लोगों की ना फ्री विल कैपेसिटी इन लोगों ने छीन ली है विद द यूज ऑफ कलेक्टिव 2.0 एंड ये चीज सही नहीं है. It's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm भाई, sorry, but if you don't understand that, सेचेनॉव you're an सारी की idiot. सारी वर्ल्ड को ना उसकी स्लेव बना लेना चाहता है. एंड ये चीज तो भाई गेम स्टोरी में खतरनाक ट्विस्ट लेके आ रही है. मतलब हम लोग स्टार्टिंग से गलत साइड में थे लग रहा है Boss अब. would never do that. He would, and he will, on Monday. मतलब लरीसा एंड विक्टर Oh, this पेट्रोव is ये लोग really hard अच्छे to लोग swallow. थे. ये सब रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करवा दिया था रोबोट्स But I'll में. help you. खतरनाक स्टोरी Whatever your ट्विस्ट plan गाइस. is. You're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me. Yeah. I want to hear what he's got to say. P1, P2, P3. अरे जो सपने में गाइस मुझे आवाजें नहीं आती है इस गेम में, वो सेम आवाज अभी सुनाई दे रही है वापस अपने हीरो को. अरे हो रहा है कुछ तो इल्यूजन्स वापस आ रहा है. कहीं वापस हम लोग उस ड्रीम में तो नहीं चले What was जाएंगे? that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. यार कुछ तो हो रहा है. अपने हीरो को डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है. देख रहे हो बीच बीच में ना इल्यूजन्स आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं. My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, soldier. You won't even remember a thing.
Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help. हेलुसिनेशंस हो रहे हैं Everything हमें. ends well. No thanks. 2 बार हम लोग I'll ऐसे go on ही vacation and खतरनाक fix me ड्रीम right में up. पहुंच गए थे. I mean, एंड जब उठते थे तो भाई this all कुछ ही ends अलग ही तहस-नहस हुआ रहता था. Fine. listen, about Victor. What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? बात तो सही है यार. विक्टर पेट्रोव तो फिर अच्छा चीज ही कर रहा था. I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. गाइस देख रहे हो, ये सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर कलेक्टिव 2.0 है. एंड इस फेज पे आके ना स्टोरी में पता चल रहा है कि ऐसा ट्विस्ट आ चुका है. मतलब डॉक्टर सेचनॉफ जिसको हम लोग गेम स्टोरी के बिगिनिंग से ट्रस्ट करते हुए यहां तक पहुंच गए, अब पता चल रहा है कि यार उसके इंटेंशंस टोटली रॉन्ग है. वो कलेक्टिव 2.0 से सारे लोगों को इस तरीके से कंट्रोल करेगा एंड इनके माइंड एक्चुअली हैप्पी प्लेस में रहेंगे. शायद से कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस कि वो ड्रीम में जो हम लोग चले जाते हैं वही वो हैप्पी प्लेस है. बिकॉज ये लोग भी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, देख रहे हो. क्या पता यार, देखते हैं और थोड़ा स्टोरी रिवील होगा तो पता चलेगा. बट काफी सारे क्लूज हमें मिल चुके हैं. अब लेट्स सपोर्ट द राइट साइड गाइस. अब लरीसा फिलाटोवा जो कह रही है ना वो सही लग रहा है बिकॉज इसने एविडेंस के साथ दिखा दिया है मुझे. चलो जल्दी जल्दी मैडम जल्दी. यहां पे किसने अटैक किया यार? हर जगह रोबोट्स का अटैक हुआ है. चलो जब तक ये आ रही है ना तब तक कलेक्ट कर लेते रिसोर्सेस. ऐसे भी और कोई काम नहीं यहाँ पे जब तक ये पहुंच नहीं जाती. बहुत बड़ी टेस्ट फैसिलिटी है लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है. बट अपने हीरो को ना वापस इल्यूशंस एंड हेलुसिनेशंस हो रहा है. Ah, fuck. I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Does your perception of the world change? Yeah, exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. Oh no. How did you interrupt वही it? है गाइस, वही है. I don't know. जो इमेजिनरी वर्ल्ड में जब ब्रेन चले जाते हैं उसे लिम्बो कहते हैं. एंड ये ऑलरेडी हमारे साथ 2 बार हो चुका है गाइस गेम के अंदर. तो इस बार मुझे फिर से वो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Voshod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. It doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Voshod polymer extension? The Voshod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles, why the fuck are you all staticky? भाई What the क्या hell क्या is छुपाया going हुआ है on? डॉक्टर Keep it सेचनॉफ से. together, Major. If Guys, what I'm अपना thinking glove is में भी ना true, कुछ ना कुछ I should be mystery able है. to access the archive right now. There will be records about you. Who exactly is our glove? चार्ल्स ये नहीं पता. जैसे ही हमने उसे एक क्वेश्चन पूछा है ना अभी, वो भाई हकलाने लग गया.
State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Cheriton Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. बहुत सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं सेचेनोव ने हम लोगों से, ये क्लियर होते जा रहा है। देखो चार्ल्स बात ही नहीं कर रहा है गाइस मेरे से अब। Nothing. So, what क्या is बदतमीजी Charles है? then? Long story short, your Charles is Professor Cheriton Zaharov. Huh, that was short. So how could he be Zaharov? Zaharov Zaharov was अपना developing ग्लव the बेसिकली collective एक प्रोफेसर है। subsystems and worked on the module. ओ भाई, एंड The इसने भी one you कलेक्टिव have 2.0 के inside you. बनाने में काम किया था। They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now, when he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. ओ गाइस, चार्ल्स जो कि अपना ग्लव है ना, वो बेसिकली एक प्रोफेसर है जिसका नाम है चैरिटन ज़हारोव, एंड उसे अपने ग्लव में फिट किया है सेचेनोव ने। तो यार ये ग्लव बेसिकली एक लिविंग सबकॉन्शियसनेस है, यानी कि एक रियल इंसान हमारे ग्लव के अंदर है भाई। So Charles isn't a person anymore. Just a device. I don't know, I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. How can you talk about this so calmly? To me, Cheriton Radionovich died a long time ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Welcome, Cheriton Okay. Zaharov. What is the subject of your query today? Agent P3, personal file. एजेंट P3 पर्सनल फाइल, यानी कि गाइस अपना जो मेन कैरेक्टर है ना, So, which one do you want उसके first? रिलेटेड कुछ I couldn't रिकॉर्ड्स care हमें less. पता चलने वाले Then हैं। pick one at random. ओके, क्या करना है? ब्रिंग लरीसा अ रिकॉर्ड। ये रहा भाई। कुछ ना गाइस, स्टोरी में बहुत खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है अब। Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. Find another recording. ओके, फाइंड अनदर रिकॉर्डिंग। तो इस रिकॉर्डिंग में ना गाइस कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं था P3 के बारे में। बेसिकली P3 वॉर में इंजर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, एंड उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे मेटल पार्ट्स इसके बॉडी में लगाए गए, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अपने हीरो को भी पता है ये चीज़। नेक्स्ट रिकॉर्ड कहाँ है? यहाँ पे रिसोर्सेज लेकिन बहुत ज़्यादा है कलेक्ट करने के लिए। रिकॉर्ड कहाँ है वो नहीं दिख रहा है। रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं मुझे, बट
रिकॉर्ड चाहिए जल्द से जल्द मुझे। कहाँ है होगा? नहीं कि होना चाहिए, किसी ड्रॉर में भी मिल सकता है, पता नहीं, इसलिए सब कुछ चेक कर लेता हूँ मैं जल्दी से। और नहीं मिला तो यार रिसोर्सेस तो मिल ही रहे मुझे, तो दैट इज ऑल राइट। बट स्टोरी ना बहुत सही लग रही है। अब धीरे धीरे हम लोग सच्चाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ओ ये रहा रिकॉर्ड। आजा भाई, यहाँ पे कुछ है? नोप्स। चलो ये रिकॉर्ड देते हैं। Okay, play this one. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? 'Cause before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. ओके गाइज, अभी तक ना 2 रिकॉर्डिंग्स प्ले हो चुके हैं एंड उसमें से ना धीरे धीरे ऐसे हिंट्स मिलते जा रही है कि डॉक्टर सेचेनोव ने हमें गुलाम बना के रखा है इस गेम के अंदर। बट अभी भी अपना हीरो ये बिलीव करता है कि यार इट्स ऑल राइट बिकॉज डॉक्टर सेचेनोव ने ही अपने हीरो की जान बचाई थी, तो यार वो वॉलंटियर भी बन सकता है इसके टेस्ट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और रिकॉर्डिंग ये रही, इसे प्ले करते हैं अब। बट क्या डॉक्टर सेचेनोव कुछ छुपा रहा है यार हमसे? Let's give this one a spin. Procedure. Implant the Voskhod neuropolymer brain function extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient, Major Sergei Nechayev. Codename, Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married. P3 जो कि अपना हीरो है गाइस इस गेम में, उसकी एक वाइफ भी है एंड उसे याद भी नहीं इस चीज के बारे में। World of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the major into combat mode on command. Oh no! I'd like to add that I am नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। What a load of crap. I mean, there's no fucking way. मतलब डॉक्टर सेचेनोव ये कह रहा है कि इसको बार बार लिम्बो में ये डाल सकता है अपने हिसाब से, यानी कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड में, एंड देन इसके बॉडी को कॉम्बैट बॉडी के जैसे यूज कर सकता है लोगों को अटैक करने के लिए। Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? The boss would never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind नहीं control यार, system. ये तो डॉक्टर सेचेनोव is the villain यार।
You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. अभी भी लेकिन P3 बिलीव नहीं कर रहा है, तो फिलाटोवा ने सीधा ये बता दिया कि जाके खुद ही पूछ ले। बट लिटरली गाइज, P3 को कंट्रोल करने के लिए उसके ब्रेन से उसने सारे मेमोरीज तक मिटा दिए। P3 की एक वाइफ भी हुआ करती थी एंड उसकी भी मेमोरी नहीं है इसके हेड में। तो जब भी P3 की जरूरत पड़ती है सेचेनॉव को ना, वो इसे ड्रीम में डाल देता है एंड इससे भाई अटैक करवा लेता है जहां पे भी जरूरत पड़े, सो दैट ही इज ऑल्सो नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है। तो ब्रेन में इसने इस तरीके की कुछ चीज इम्प्लांट कर दी है। भाई लीव द एकेडमी। भाई Think it over साहब, while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. चार्ल्स की भी बात में दम है यार। अपना हीरो चार्ल्स को ये पूछ रहा है कि चार्ल्स ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक्चुअल में एक रियल प्रोफेसर हुआ करता था एंड उसकी कॉन्शियसनेस ग्लव में डाली गई है। You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov going to keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet. तो यार चार्ल्स जो अपना ग्लव है ना, वो भी यही बोल रहा है कि P3 की एक्चुअल में एक वाइफ थी, भले ही इसे याद नहीं है अब। The boss's metal twins? No way. This is total BS. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते जा रही है। Holy shit. Fuck me, this can't be a... तो गाइस, जो मैं कह रहा था ना कि चार्ल्स ने हमें पहले क्यों नहीं बताया था कि वो एक्चुअल में एक नॉर्मल ग्लव नहीं है एंड नॉर्मल रोबोट नहीं है, बल्कि एक रियल प्रोफेसर की सबकॉन्शियसनेस है। तो उसका रीजन चार्ल्स ने ये बताया कि सेचेनोव ने एक्चुअली चार्ल्स को उड़ा दिया था एंड देन इसके मेमोरी में फिट कर दिया था चार्ल्स को। तो यार चार्ल्स खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से किस पे ट्रस्ट किया जाए, तो इसलिए वो अभी तक चुप था एंड फाइनली अभी उसे लगने लग गया है कि P3 यानी कि जो हम लोग है इस स्टोरी में, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है एंड देन वो अभी ओपन है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस, P3 की जो वाइफ थी ना, उसकी कॉन्शियसनेस बचाई नहीं जा सकी थी, बट उसकी जो इम्प्रिंट्स थी सबकॉन्शियस माइंड की, उसे 2 बॉडीगार्ड्स में डाला गया है, जो कि खतरनाक से 2 रोबोटिक बॉडीगार्ड्स हैं जो हमेशा सेचेनोव के पीछे रहते हैं। तो थोड़े थोड़े शायद से कैरेक्टरिस्टिक्स P3 के वाइफ के उन रोबोट्स में हो सकती है।
बट एनीवेज गाइज, अभी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, लीव द एकेडमी, एंड हम लोग को शायद से डायरेक्टली सेचनॉफ को फेस करने जाना पड़ेगा इस बार, एंड उससे डायरेक्ट पूछताछ करेंगे। तो यहां से गाइज नेक्स्ट एपिसोड में गेम कंटिन्यूड रखेंगे। अगर सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए वंस अगेन बाय एंड टेक केयर।